नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रंप सदर मुंतखब हो चुके हैं। 20 जनवरी को वो सदर बन जाएंगे। अब इसके लिए वो अपने लिए जो है साथी उनका इंतखाब कर रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था कि किस तरह उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वाल्स को बनाया है। अभी कल जो अनाउंसमेंट हुई है उसकी तरफ से, उसमें एक खातून है जिसका नाम है तुलसी गबार्ड। उसको उसने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस DNI की पोस्ट के लिए मुंतखब किया है, चुना है। और ये बहुत बड़ी पोस्ट है। वैसे ये सब लोग कैबिनेट के मेंबर ही समझे बन जाएंगे, लेकिन इसकी इसलिए भी ज़्यादा अहमियत है। शी विल हेड 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज और हर सुबह सदर ट्रंप इसके साथ मिलके बैठेगा और इससे ब्रीफ लेकर फिर बाकी पूरा दिन अपना काम करेगा। आप समझिए कितनी अहम है। और ये खातून जो हैं अपने आप को फखरिया हिंदू कहती है। ये अलग बात है कि ये जो है जब पैदा हुई थी उस वक़्त ये ईसाई थी। इसके माँ बाप भी ईसाई, कैथोलिक, क्रिश्चियन, लेकिन बाद में ये हिंदू बन गई। इसकी माँ भी हिंदू बन गई। इसके वालिद साहब अभी तक क्रिश्चियन हैं लेकिन हिंदू वैल्यूज़ को अजीज़ रखते हैं। 1981 में समोआ में पैदा हुई थी और फिर हवाई में जो है ये कांग्रेस वुमन बनी थी, कांग्रेस की मेंबर थी, यानी जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है अमेरिका में उसकी। अच्छा, इससे पहले 2002 में ये इराक गई थी, आर्मी में थी और वहाँ पर इसको मेजर का ओहदा था। फिर जब वहाँ से वापस आई तो फिर से इसने सियासत ज्वाइन कर ली और 2019 में जस्ट 5 इयर्स बैक डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन हासिल करने के लिए इसने कोशिश की थी, लेकिन फिर इसने अपना हाथ वापस खींच लिया था। अभी ताज़ा अक्टूबर में जो है ये वापस रिपब्लिकन पार्टी में आ गई है। और इसके लिए मशहूर ऐसे है, लोग कहते थे किसी वक्त में भाई शी इज़ रशियन एजेंट, रूसी जासूस है। आज उसको सदर ट्रंप, प्रेसिडेंट इलेक्ट जो कहें से मुंतखब सदर जो हैं ट्रंप, उन्होंने अपने लिए इसे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ओहदा दिया है। और जब ये कांग्रेस वुमन बनी थी तो इसने जब जो हलफ लिया था ना, वो हलफ भी इसने गीता के ऊपर लिया था, गीता के ऊपर हाथ रख के। क्या है, कुछ लोग बाइबल के, कुछ लोग कुरान के, हर किसी का अपना अपना। कुछ लोग तो जस्ट जैसे आई हियर बाय से ऑन सालेम अफर्मेशन, ऐसा भी चलता है, लेकिन इसने गीता के ऊपर कसम खाई थी। और बावजूद इसके कि इसकी पैदाइश तो 1981 की है, लेकिन इसको जो कुछ बड़े सगीर में गया गुजरा है, बहुत सारी चीज़ों का इल्म है। और 1971 में पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज थी, उन्होंने उस वक़्त जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जो आजकल बांग्लादेश कहलाता है, उसमें जो मिलिट्री ऑपरेशन किया था लगातार 9 महीनों के लिए, और उसमें जो उन्होंने 30 लाख जानें ली थी। मुसलमानों ने मुसलमानों के कत्ल किए थे, मुसलमानों ने मुसलमान लड़कियों की जिना की थी, जो है इस्मत दरी की थी। और 1 करोड़ के करीब, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, वो वहाँ से
पनाह गुज़ीन जो है भारत आए थे पनाह लेने के लिए। इस ये जो भी एपिसोड गया गुजरा, और अभी भी जैसे ये मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो लगातार हिंदुओं पे मजालिम हो रहे हैं बांग्लादेश में, इन सब बातों पे इसने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं उसका वो टुकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद फैसला कर लीजिए और ये भी अंदाज़ा लगाइए कि ये ट्रंप के साथ अभी 4 साल यहाँ पे रहेगी। आप खुद देख लीजिए। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months. Resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. US Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places painted with yellow patches marked H." End of quote. Now, the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. In the early 1900s, Hindus made up roughly 33% of the Bangladesh population. Because of this persistent Islamist campaign targeting Hindus, just 8% of Bangladesh's population are Hindus today. Just a few days ago, in Bangladesh, hundreds of hardline Islamist extremists attacked Hindu temples, destroyed a train, set fire to government buildings, the press club, and public buses, leaving dead and injured behind. Unfortunately, the Islamists' campaign of terror against Hindus, other religious minorities, secularists, atheists, and others in Bangladesh is not unique. It's been going on for centuries. Prior to US regime change wars in Iraq, Libya, and Syria, which either toppled or weakened secular authoritarian leaders who protected religious minorities from Islamist jihadists, there were 1.5 million Christians in Iraq and 2.2 million in Syria. Now there are an estimated 200,000 to 300,000 Christians in Iraq and 450,000 in Syria. Afghanistan was a very multi-religious country which included Hindus, Buddhists, Zoroastrians, and more prior to the Islamist takeover. Today, it is estimated there are around 1,000 Hindus who remain. Religious minorities make up less than 1% of Afghanistan's population. Until the leaders of the United States and the world condemn and commit to defeating the Islamist exclusivist ideology, an ideology which holds that all non-Muslims and many so-called quote-unquote heretical Muslims need to be wiped from the face of the earth, enslaved, or at the very least kept as second-class citizens without the right to own land, worship openly, etc., like in Pakistan, the jihadist campaign of terror will continue throughout the world.
इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।